All right. So let's start our demo session, okay? So as far as English Precis and composition is concerned, we will first talk about the syllabus, the marks distribution, and the past paper patterns, okay? Syllabus जो FPSC की वेबसाइट पर गिवन है वो कुछ इस तरह है. It has 20 marks for Precis writing. Precis basically जैसे अभी सर अल्ताफ ने आपको समझाया, Precis is basically a passage. आपको एक passage given होगा. You will have to understand the gist, the essence, the idea of the passage, and then you have to write it down in a very concise form. प्रिसाइज फॉर्म में आपको उस पूरे पैसेज को लिखना होगा जिसके अंदर उसका आइडिया, उसकी जस्ट, उसकी समरी बहुत क्लियर होनी चाहिए. देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ प्रेसी राइटिंग जो कि हम जब अपना सेशन स्टार्ट करेंगे तो फिर हम उसमें इन डिटेल तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ेंगे. But for now, what you really need to understand is Prezi is basically writing 1/3 of a given paragraph. Then is your reading comprehension. जैसे हम लोग बचपन से करते आए हैं, reading comprehension. There is a paragraph. You have to thoroughly read it, and then you have to answer all the questions that are given at the end of the paragraph. अब FPSC में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ये अब डिफिकल्ट कर दी गई है बिकॉज पहले तो सिर्फ एक कॉम्प्रिहेंशन होती थी, आपको सवाल दिए जाते थे और आप उनके आसानी से जवाब लिख दिया करते थे. लेकिन अब जो कॉम्प्रिहेंशन आती है उसका पैसेज थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द जस्ट द एसेंस ऑफ द पैसेज. के पैसेज में कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की जा रही है, आपको पैसेज की पूरी समरी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो आखिर में आंसर्स होंगे वो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस के ऊपर देना होंगे, ना कि आप पैराग्राफ में से चंद फिक्रे उठाएं और आखिर में अपने आंसर्स में लिखते हैं. So this is the technique that we are going to learn now, especially CSS 2024 का जो पेपर था उसके अंदर ये बहुत क्लियर था. उसमें एग्जामिनर ने 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे दिए थे जो कि आपकी पैसेज की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है. So you have to now develop a set of skills जिसके अंदर आप कोई भी given passage है उसको understand करें on the basis of what is really given in the passage rather than just writing down the sentences from the passage in the answer. Then is your grammar and vocabulary, which is my favorite part, to be honest. Sentence correction, again, grammar part, grouping of words, जिसमें analogy भी आ जाती है, synonyms, antonyms भी आ जाते हैं, pair of words और translation. आप लोगों को मेरी आवाज ठीक से आ रही है और आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? Because I'm switching to the other screen and I'm not sure if you guys are actually able to see the screen and listen to me clearly actually. It is for CSS as well as PMS. अगर आप CSS का पूरा सिलेबस कर लेंगे तो PMS आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. So consider it for CSS as well as PMS. This is the answer to the question जो कि अभी किसी ने मुझसे किया है. Okay. So this is the syllabus that is given on the website of FPSC. और इसको CSS और PMS दोनों के लिए कंसिडर कीजिए. अगर आप ये तमाम सिलेबस कवर कर लेते हैं तो फिर PMS का भी आप ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर कर लेंगे. अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वोकैबुलरी 20 मार्क्स की आती है, प्रेसी इज फॉर 20 मार्क्स, कॉम्प्रिहेंशन फॉर 20 मार्क्स, ट्रांसलेशन इज फॉर 10 मार्क्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स 10 मार्क्स के आते हैं एंड ग्रामर पोर्शन इज फॉर 20 मार्क्स. वोकैबुलरी बेसिकली इज गिवन इन योर MCQs. MCQs में आपकी 100% vocabulary आती है. The 20 mark objective part of your paper is completely based on vocabulary. First 10 marks are for synonyms. एक word आपको given होगा question में and then you will be given 4 options. You will have to choose one option which is closest to the meaning of the word that is given in the question. For example, अगर question में, in fact I will give you an example of the recent examination of 2024. इसके अंदर एक word आया था ubiquitous. Okay, so the question number 1 of CSS 2024 MCQ part is ubiquitous. So the word ubiquitous means to be present everywhere. All right, so ubiquitous word था, इसके 4 options given थे like scarce, present everywhere, unique, limited. So the right option or the closest answer to the word ubiquitous is to be present everywhere. All right, antonyms जो कि next 10 marks आपके MCQs के portion में होते हैं. Antonyms are basically words and opposites. Recently एक antonym जो आया है indolent,
Indolent means to be very lazy, lethargic, inactive. वो लोग जो बेड पे पड़े रहते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते हैं, डोलते नहीं हैं, तो वो indolent कहलाते हैं. So indolent means to be lazy, right? So there were four options given in the paper: lazy, active, lethargic, energetic. Indolent का जो opposite होगा वो active होगा, energetic होगा. So you have to choose the closest answer to the question that is given in the question. ओके सो एमसीक्यूज जो कि 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, उसके अंदर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं. फिर 80 मार्क्स का जो पार्ट होता है विच इज योर रिटन एग्जाम, इन दैट आल्सो यू हैव टू नो वोकैबुलरी. उसमें भी एक क्वेश्चन आता है जो कि कंप्लीटली बेस्ड होता है आपकी वोकैबुलरी के ऊपर. वो होते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स. पेयर ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं? सो पेयर ऑफ वर्ड्स आर बेसिकली homophones. I think you must have learned homophones when you were in your higher classes. Homophones are those words जिनकी pronunciation तो same होती है but they have different meaning. For example, look at these two words. ये recently 2024 के पेपर में आया था. Creek, CREEK creek and CREAK creek. So both of these words have absolutely same pronunciation. But they have completely different meanings. जो CREEK creek है, that is basically, I'll show you a picture. This is a creek. Okay, Arabian Sea is being distributed या फिर ये branch off हो रहा है small या narrow passages of water में, जिनको हम creek कहते हैं. Arabian Sea is branching off in several tributaries या several narrow passages which are called creek, such as Kori Creek, Kajar Creek, Sir Creek. So I hope you can see this picture. So next time, whenever you look at the word creek, this picture should come in your mind. This is one way of learning vocabulary. सर अल्ताफ ने जैसे आपको बताया था कि बहुत सारे तरीके होते हैं vocabulary learn करने के, और basically आपको vocabulary cram करनी होती है, तो उस cramming के भी बहुत सारे effective तरीके होते हैं. And one of the very efficient and convenient way to learn vocabulary is to look at a word and then look at the picture. अगर तो वो कोई ऐसी चीज है, कोई materialistic चीज है, तो आप उसकी पिक्चर देखेंगे and then वो पिक्चर आपके दिमाग में सेव हो जाएगी. So whenever you will look at the word, that picture will instantly come in your brain and आपको उसकी मीनिंग समझ में आ जाएगी और फिर आप उसका सेंटेंस भी बना सकते हैं. तो यहाँ तक आप सब लोगों को बात समझ में आई? मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली ऑडिबल और विजिबल हूँ? ऑल राइट, लेट्स गो बैक टू द लेक्चर. हमने CREE क्रीक का तो मतलब समझ लिया, बट एक और वर्ड है CREA क्रीक. नाउ व्हाट डज this word mean? This word is not a thing, it's a sound. Whenever your door makes a sound when you open or close it, when the hinges of your door is not properly oiled, और जब आप कोई चीज जमीन पे ड्रैग कर रहे होते हो तो एक बड़ा इरिटेटिंग सा क्रीकिंग साउंड प्रोड्यूस होता है. सो दैट इज द क्रीकिंग साउंड. ओके, the hinges of the door were not properly oiled. That's why the door was making a creaking sound. So this is the sentence that you are going to write in the paper if you see this word in the paper. तो ये मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रही थी पेयर ऑफ वर्ड्स की कि ये होते क्या हैं और किस तरह से पेपर में आते हैं. वन क्वेश्चन दैट मोस्ट पीपल आस्क मी अबाउट पेयर ऑफ वर्ड्स इज कि मैम अगर दो वर्ड्स गिवन हैं और मुझे एक वर्ड की मीनिंग आती है लेकिन दूसरे वर्ड की मीनिंग नहीं आती, तो क्या मैं वो अटेम्प्ट करूं? सो द आंसर इज प्लीज डू. आप उसको अटेम्प्ट कीजिए. कोई भी एक मार्क का क्वेश्चन लीव करने से बेहतर है कि आधे मार्क्स का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आ जाइए. अनदर क्वेश्चन दैट अराइजेस इज कि अगर आप एक सेंटेंस लिखकर आ जाते हैं और दूसरे वर्ड का सेंटेंस नहीं लिखते, तो क्या आपको 1 मार्क, या 1 मार्क तो खैर नहीं मिलेगा, तो क्या आपको 0.5 मिल जाएगा? सो इसका एक्चुअली आंसर गिवन नहीं है. FPSC की वेबसाइट पे you will not be able to find the answer to this question. However, the conventional wisdom is that you might get 0.5 अगर आप एक सेंटेंस लिखकर आ जाते हैं और दूसरे वर्ड का सेंटेंस आपको नहीं आ रहा है तो आप छोड़कर आ जाएं, गलत लिख दें, तो आपको आधा मार्क्स मिल सकता है.
बाकी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आपको दोनों ही वर्ड्स के सही सेंटेंसेस लिखकर आने हैं पेपर में, एंड दैट इज ओनली व्हेन यू आर गोइंग टू गेट 1 मार्क, और यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मार्क एट ऑल। एक और इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन तो नहीं लेकिन एक ट्रिक बहुत सारे स्पेशली साइंस के स्टूडेंट्स जो पेपर में करके आते हैं वो ये है दैट फॉर एग्जांपल द वर्ड इज creek and you don't know the meaning of the word creek. So most students, they, I don't know as a joke or what, they write in the paper, I do not know the meaning of the word creek. So this is a sentence, right? And grammatically it is correct. The examiner should give you mark on this, but he's not going to give you any mark on this because it is clearly stated in the question that you have to use the word in your sentence in such a fashion that you should be able to give a clear meaning of the word. जब आप लफ्ज को इस्तेमाल करेंगे अपने सेंटेंस में तो आपको उसको इस तरह से इस्तेमाल करना है कि आप उस वर्ड की क्लियर मीनिंग भी स्टेट कर रहे हैं। ओके, जैसे कि CREA के क्रीक जो कि एक साउंड है, वो अगर आप उसका सेंटेंस बना रहे हैं तो आई गेव यू एन एग्जांपल इन व्हिच आई सेड दैट the hinges of the door were not properly oiled, that's why the door was making a very irritating creaking sound. So इसके अंदर एक बहुत क्लियर स्टेटेड मीनिंग है वर्ड की। तो ऐसे अगर आप सेंटेंसेस लिख कर आएंगे, और दिस इज समथिंग जो कि प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएगी, वी विल डू दिस, वी विल कवर दिस इन आवर सेशंस। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द पेयर ऑफ वर्ड्स। ऑलराइट, अगर ईडियम्स की बात करें तो ईडियम्स आई गेस आप सब लोगों को आते होंगे। ईडियम्स मुहावरों को कहते हैं। ईडियम्स पेपर में आते रहे हैं, लेकिन जो अब रीसेंट पैटर्न है जो कि अब मैं एक स्लाइड में आपसे डिस्कस करूंगी, तो उससे आपको पता चलेगा कि ईडियम्स अभी कुछ सालों से नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर कुछ एग्जांपल्स जस्ट टू गिव यू एन आइडिया व्हाट आर ईडियम्स, वो लोग जिनको ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं पता ईडियम्स क्या होते हैं, सो फॉर दोज पीपल ईडियम्स आर बेसिकली मुहावरे। कुछ ईडियम्स सच एज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, इट मीन्स दैट यू आर नॉट फीलिंग वेरी वेल। आई टू टेक अ रेन चेक, इसका मतलब होता है कि किसी अपॉइंटमेंट को रीस्केड्यूल करना। अब if you look at the point number 1, it is basically a sentence which is I am feeling under the weather, I'll have to take a rain check. So इस sentence के अंदर मैं 2 idioms use कर रही हूँ, और basically what I'm stating in the question in the sentence is that I'm not feeling very well, so I will reschedule my appointment. Yeah, I will go for the appointment, or I'll um, go for or I'll take the demo session some other day. Okay, so if I say to Altaf, I'm not feeling very well, or I'm feeling under the weather, I'll have to take a rain check. So this means that I'm not feeling very well. I'll have to take the demo session some other day. Okay. Flying colors, I graduated flying colors. बहुत बेहतरीन कामयाबी और अच्छे नंबर्स के साथ आपने अचीव की अपनी ग्रेजुएशन। टू क्लाइंब अप अ ग्रीजी पोल, अब क्लाइंब अप अ ग्रीजी पोल के पीछे तो एक स्टोरी है। इडियम्स याद करना आसान बहुत हो जाता है जब आप उनके पीछे की स्टोरी जो छोटी सी होती है वो अगर आप याद कर लें। क्लाइंब अप अ ग्रीजी पोल बेसिकली 1868 के अंदर ये जो फिक्रा है ये बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हुआ था जब एक प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, वो 1868 के अंदर प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो उन्होंने कहा था दैट आई हैव क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ द ग्रीजी पोल, बाय दैट ही मेंट दैट ही हैव क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ हिज करियर। एक प्राइम मिनिस्टर, अगर आप में से कुछ पॉलिटिकल साइंस के या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के स्टूडेंट्स होंगे, दे विल नो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि पाकिस्तान का है, इंडिया का है, ब्रिटेन का है, इसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, यानी कि जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है ऐसी गवर्नमेंट्स के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर की होती है। सो व्हेन बेंजामिन डिज़रायली said in 1868 that I have climbed to the top of the greasy pole, he meant कि उन्होंने अपनी करियर की पीक हासिल करनी है, उन्होंने अपने करियर का प्राइम पोजीशन हासिल कर लिया है। ठीक है, सो टू क्लाइंब अप द क्रीजी पोल का मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगाकर कोई बहुत सक्सेसफुल पोजीशन हासिल कर लें। टू कास्ट कर्ल्स टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, इसका मतलब ये है कि किसी ऐसे शख्स के लिए कुछ ऐसा काम करना जिसके लिए वो कभी भी ग्रेटफुल नहीं होगा। if you use it in a sentence, आप कह सकते हैं she will never be grateful for your favors, you are casting pearls before a swine, यानी कि आप उसके लिए कितना भी कर लें, कितने भी फेवर्स कर लें, वो कभी भी ग्रेटफुल नहीं होगी, because you are basically casting pearls before a swine. Raining cats and dogs when it's raining very heavily, तो फिर आप कहते हैं raining cats and dogs। इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। In order to learn and memorize this idiom, you will have to you know
लर्न दैट स्टोरी जो कि इसके पीछे है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. सो जब भी आप ये इडियम पढ़ेंगे तो फौरन आपके दिमाग में वो स्टोरी क्लिक होगी, आपकी इसकी मीनिंग याद आ जाएगी, एंड देन यू विल बी इजीली able to write the sentence. So these are some ways to learn vocabulary, some ways to learn idioms जो कि हम अपने सेशंस में करेंगे आगे. तो यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आ गया? मेरी आवाज और स्क्रीन विजिबल थी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है अभी तक वॉइस में या स्क्रीन की विजिबिलिटी में? Okay, this means that my internet connection is doing good right now. All right, thank you so much. Okay, so let's get back to our PPT. ठीक है. So up till now I have explained you कि पेपर में क्या चीजें आती हैं, और मैंने आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की है कि उनका मतलब क्या होता है. प्रेसी है, प्रेसी का क्या मतलब होता है, व्हाट इज कॉम्पोजिशन, व्हाट आर पेयर ऑफ वर्ड्स, व्हाट आर इडियम्स. So up till now I have tried to create a basic understanding of what we are going to deal with in the coming session. ओके. सो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमें पास्ट पेपर पैटर्न जो है वो देखना बहुत जरूरी है, यू नो, बिकॉज you are CSS aspirants. You are preparing for the most competitive exam in Pakistan. Your time is literally money right now. Your time is scarce. Your time is your most valuable resource right now. आपको अपने टाइम की एलोकेशन बहुत स्मार्टली करनी है. यू हैव टू सी कि कौन सी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको प्रायोरिटाइज करनी है, और वो कौन सी चीजें हैं जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको लेस्ट प्रायोरिटाइज करनी है. और फिर आपको अपनी जो स्ट्रेटेजी है प्रिपरेशन की उसको अकॉर्डिंगली लेकर चलना है. अगर तो आप लीस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो ऑफकोर्स आप पास नहीं कर पाएंगे. और अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को प्रायोरिटाइज करेंगे, उनके ऊपर अपने ज्यादा टाइम लगाएंगे, और this is actually going to create a greater probability of you getting greater amount of marks. 1 minute, please. So, am I audible? Am I audible? Or I'm not getting any messages. Yes, ma'am. All right. Good. You can always use your phone, sorry, your microphone, and you can answer me, okay? It's not important to answer through these messages. It'll be all right if some of you use your microphone to let me know of what I'm asking. Please give me 1 minute. Okay, so let's continue. All right. So we have to understand the past paper pattern in order to strategize our entire preparation for Presi and composition. अब अगर आप देखें तो point number 5 देखें इस slide का. In point number 5, I have mentioned that active and passive is least important to focus on. क्योंकि ये अब तक सिर्फ 2 पेपर्स में आ चुका है, 2002 के और 2004 के पेपर्स में ये आ चुका है. अगर आपके पास सब कुछ आपने प्रिपेयर कर लिया है, आपकी 12 के 12 सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन हो चुकी है, एंड यू हैव स्टिल सम टाइम टू स्पेयर, तो फिर आप एक्टिव एंड पैसिव कर सकते हैं. अदरवाइज आई वुड रिकमेंड कि आप एक्टिव एंड पैसिव जो है उसको लीस्ट प्रायोरिटाइज करें. बाकी पॉइंट नंबर 2, 3 और 4
में ये मेंशन है दैट 2016, 2017 और 2018 के अंदर सेंटेंस करेक्शन विच इज SC इज बेसिकली सेंटेंस करेक्शन, ये तीनों ईयर्स में 5 मार्क्स की आई है। पंक्चुएशन भी तीनों साल आई है 5 मार्क्स की। PUNCT इज पंक्चुएशन, DI इज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड एनोलॉजी। ओके, सो 2016, 17 और 18 के अंदर सेंटेंस करेक्शन आती रही है, पंक्चुएशन आती रही है, प्रेपोजिशन और एनोलॉजी कभी आती है कभी नहीं आती, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी आता है कभी नहीं आता। लेकिन पॉइंट नंबर 1 इस स्लाइड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है दैट फ्रॉम 2019 to 2024 व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द पेपर। योर एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू 10 mark sentence correction, 5 mark preposition, and 5 mark punctuation. So by that I mean that you have to prioritize your grammar section, जिसमें आपको further prioritize करना होगा sentence correction, preposition, and punctuation. So this is how you will save time. This is how you will be able to put your effort in right places and yield maximum result out of your effort. All right. So now let's get to, अब देखें यहाँ तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आई गेस आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ और पेपर जो है उसमें क्या आने वाला है और आपको क्या प्रायोरिटाइज करना है। फर्दर अपनी प्रेपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करने के लिए मैंने जो अभी तक तमाम पेपर्स आते रहे हैं उनको फर्दर मैंने डिवाइड कर दिया है 3 कैटेगरीज के अंदर। इन 3 कैटेगरीज में पेपर को डिवाइड करने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको फर्दर मैं एक्सप्लेन कर सकूंगी कौन सी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको अपना मैक्सिमम एफर्ट डालना है, मैक्सिमम टाइम डालना है, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। और वो कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे आप अगर अपना लीस्ट एफर्ट्स भी डालेंगे तो मसला नहीं है, क्योंकि वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल पार्ट्स होते हैं। So let's go towards the trifurcation of the paper. Trifurcation यानी किसी चीज को 3 हिस्सों में डिवाइड करना। कैटेगरी ए आपका ग्रामर पोर्शन है, ठीक है। अब ये ग्रामर पोर्शन जो है पेपर के अंदर 100 मार्क्स में से 15 से 20 मार्क्स का आता है। ग्रामर इज दैट पोर्शन विच रिक्वायर्स एक्टिव लर्निंग। ग्रामर जो है वो आप अपनी बेहतरीन कर सकते हैं लिटिल प्रैक्टिस के साथ। बाय लिटिल प्रैक्टिस आई मीन के right now I'm assuming that all the students who are taking this demo session, they are average in functional English. I'm not saying that you are superb, you're hi-fi, your English is meticulous, your English is outstanding. No, I'm not saying that. What I'm saying is you have average understanding and average skills related to functional English. लेकिन अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एवरेज फंक्शनल इंग्लिश नहीं है, उन लोगों को चाहिए कि वो कम से कम 4 से 6 महीने अपनी इंग्लिश के ऊपर लगाएं। ये वो लोग हैं जो कि जिनको अगर मैं कहूँ कि एक टॉपिक कोई सा भी रैंडम आपके दिमाग में आए, आप वो टॉपिक लीजिए और उसके ऊपर एटलीस्ट 6 सेंटेंसेस मुझे करेक्ट इंग्लिश में लिख कर दें। 6 सिंपल सेंटेंसेस इन करेक्ट इंग्लिश विद करेक्ट ग्रामर। अगर तो आप ये नहीं कर पा रहे हैं, एंड you guys should take this test yourself if you believe that you are not an average student. So you have to take this test yourself. Just pick a random topic in your mind, write it down on the paper, and try to write 6 to 8 sentences, simple sentences regarding the topic with simple functional English. और फिर आप उसको assess करवाइए और फिर देखें कि क्या आपके वो sentences सिंपल इंग्लिश में करेक्ट हैं कि नहीं। अगर तो हैं तो फिर आप यू आर एन एवरेज पर्सन, एटलीस्ट आपको फंक्शनल इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। और अगर नहीं तो फिर आई एम गोइंग टू रेकमेंड दोज एस्पायरेंट्स कि आप प्लीज पहले अपनी इंग्लिश के ऊपर काम कीजिए, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की, क्योंकि पेपर के अंदर भी अनरियलिस्टिक ग्रामर नहीं आती है। पेपर के अंदर ग्रामर वही आती है जो कि फंक्शनल इंग्लिश से रिलेटेड होती है। अगर आपको प्रॉपर स्किल डेवलप्ड है आपकी ग्रामर सेक्शन के अंदर, तो आप 80 to 90% मार्क्स आराम से ले सकते हैं ग्रामर पोर्शन के अंदर, विच इज वाई आई हैव रिगार्डेड दिस कैटेगरी एज ए, विच मीन्स दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी। सबसे आसान है, सबसे कम टाइम लगेगा, सबसे लीस्ट एफर्ट लगेगा, लेकिन आउटपुट सबसे मैक्सिमम आएंगे।
ये वो कैटेगरी है जिसके अंदर लक की इन्वॉल्वमेंट सबसे कम है। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लक बहुत मैटर करता है, जैसे वोकैबुलरी, भाई कौन सा वर्ड आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है, आपको नहीं पता। ट्रांसलेशन, कौन से ईयर के अंदर इजी आ जाए, कौन से ईयर के अंदर बहुत मुश्किल आ जाए, आपको नहीं पता। तो वो कैटेगरीज होती हैं जिनके अंदर लक इन्वॉल्व होता है। ग्रामर का वो पोर्शन है जिसके अंदर लीस्ट अमाउंट ऑफ लक इन्वॉल्व है, और ये आप एक्टिव लर्निंग के साथ और प्रॉपर अपनी स्किल्स को डेवलप करके आसानी से ये आप मैक्सिमम मार्क्स इस पोर्शन में से ले सकते हैं। अगर 15 से 20 मार्क्स का ये पोर्शन आता है, और 15 से 20 में से अगर आप 20 में से अगर आप 15 या 15 में से 12 से 11-12 मार्क्स आप ले लेते हैं, तो दिस इज रियली गुड। ये आपके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे। तो पहली कैटेगरी है हमारी ग्रामर की, जिसको हमें प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि ये सबसे आसान कैटेगरी है, सबसे आसानी से तैयारी भी हो जाएगी इसकी, और इसके सबसे अच्छे मार्क्स भी आएंगे। सेकेंड कैटेगरी इज योर प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन एंड ट्रांसलेशन। सेकेंड कैटेगरी आपकी सबसे ज्यादा मार्क्स की है, यानी कि 50 मार्क्स की ये कैटेगरी है, और प्रेसी है इसमें 20 मार्क्स की, कॉम्प्रिहेंशन इज फॉर 20 मार्क्स, ट्रांसलेशन इज फॉर 10 मार्क्स। Okay, so this category requires practice. This category requires you to do a lot of past papers and examples, because you have to develop a proper set of skills to deal with Prezi comprehension and translation. And this is something that we will be doing through different assignments and assessments and past papers and examples. We will try to develop that set of skills which is required to gain most marks out of this particular category. इस कैटेगरी के अंदर आपकी लक की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी बहुत होती है, क्योंकि कुछ दफा ऐसा होता है कि आपकी प्रेसी बहुत मुश्किल आ जाए या ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल मुश्किल आ जाए, ऐसा हो सकता है। वरना नॉर्मली ऐसा होता है कि आपकी एवरेज प्रेसी, एवरेज कॉम्प्रिहेंशन और एवरेज ट्रांसलेशन ही आती है। अगर आप रीसेंट पेपर 2024 का देखें तो उसके अंदर आई कैन टेल यू कि तीनों जो हैं वो एवरेज आए, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थे, बहुत ज्यादा आसान नहीं थे, एवरेज थे। ठीक है, तो इस कैटेगरी के अंदर हमें अपना बहुत एफर्ट डालना है, इसके अंदर से हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं। और इस कैटेगरी के अंदर आप, एक मुहावरा है ना उर्दू का, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, इसी तरह से इस कैटेगरी के अंदर आप जितनी प्रिपरेशन करेंगे, जितना एग्जाम्पल्स और पास पेपर्स को अटेम्प्ट करेंगे, जो हम अपने सेशंस में इंशाल्लाह आगे करेंगे, उतना ही आपके रिजल्ट्स बेहतरीन आएंगे। योर एफर्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्ट। Now we come to our category number 3, that is our category C. Category C के अंदर सबसे unpredictable, सबसे ज्यादा luck based portion आता है। मैं इसको luck based portion क्यों कहती हूँ, क्योंकि ये vocabulary का portion है। vocabulary का portion 20 मार्क्स का तो पूरा MCQs vocabulary के ऊपर होता है। बाकी जो written subjective part होता है उसमें भी अराउंड 10 मार्क्स जो होते हैं वो आपके पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, तो उसमें 10 मार्क्स आपके 80 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें भी 10 मार्क्स होते हैं, और ऑब्जेक्टिव तो होता ही पूरा 20 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड ऑन वोकैबुलरी होता है। सो अराउंड 30 मार्क्स आपके वोकैबुलरी के ऊपर बेस्ड होते हैं पेपर ऑफ 100 मार्क्स के। अब नाउ आई टेल यू अ फन फैक्ट। You know, Oxford Dictionary has around 1 lakh to 1.5 lakh, that is 1,500,000 words of functional English. For like, there are 1.5 lakh functional words in Oxford Dictionary. और वो functional words वैसे ही होते हैं जो कि आपके पेपर में आते हैं vocab के portion के अंदर। It is completely, it is impossible to learn all of those words. You know, there are aspirants, I see a lot of people who uh, spend so much time on the vocabulary, और वो 100, कुछ 200, some people even 500 words, you know, preparing 500 words of vocabulary is like preparing a lot of words for the portion. वो इतने words prepare करते हैं, and then at the end of the day they get disappointed because बहुत कम ऐसे words होते हैं जो आते हैं पेपर के अंदर। Why? Because this portion of the paper is completely based on luck. It is completely unpredictable. इसके अंदर आप चाहे कितना ही गुड़ डाल लें, कोई probability नहीं है कि मीठा होगा या नहीं। So this portion is the one जिसके अंदर हमें अपना least amount of time देना है, या एक certain amount of time सारे दिन में देना है। अगर आप अपने तमाम पेपर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं और फिर प्रेसी को भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो रोज आप इसको आधा घंटा दें या 20 मिनट दें, इससे ज्यादा ना दें, क्योंकि आप चाहे कितने भी वर्ड्स प्रिपेयर कर लें, आप इस पोर्शन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू प्रिपेयर 1000 words, which is impossible to do, but still let's say if you prepare 1000 words, so what are you going to do about the rest of
1,49,000 words. What are you going to do about those words? You can never prepare vocabulary completely. So this part is heavily based on luck. It can never be fully prepared. और इसको आप अपने least amount of time देंगे. Okay, I'll mention second category, Momina, for you. Second category आपकी सबसे important category थी जो आपने मिस कर दी. Second category is of 50 marks. अच्छा, ये जो कैटेगरी है, ये जो ट्राइफर्केशन की है, ये मैंने की है, ये एफपीएससी की वेबसाइट के ऊपर नहीं है. ये कैटेगरीज मैंने बनाई है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजिकली कर सकें. ऐसे नहीं कि हेयर एंड देयर आपकी प्रिपरेशन हो रही हो, कभी कुछ कर लें कभी कुछ कर लें. नहीं, ये मैंने कैटेगरीज इसलिए बनाई है ताकि आप स्ट्रेटेजिकली अपनी प्रिपरेशन करें, मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम हाईएस्ट प्रायोरिटी बेस्ड टॉपिक्स को दें, और लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और अनलकी जो कैटेगरी है उसको टाइम दें, ताकि आपकी मैक्सिमम आउटपुट मिल सके आपको पेपर में, एंड सो दैट यू कैन यील्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मार्क्स इन द पेपर. सो सेकंड कैटेगरी for me is Prezi, comprehension and translation. This is the most important category, and this category consist of the most amount of marks, that is 50 marks. इसके लिए आपको अपनी skills develop करनी पड़ेंगी, आपको बहुत practice करनी पड़ेगी, decent amount of practice in order to get decent amount of marks. ये वो category है जिसके अंदर आप जितना effort डालेंगे उतना ही बेहतरीन आपको result मिलेगा. So Momina, this is the category 2. All right, so यहाँ तक I was clear. यहाँ तक आप सब लोगों को बात समझ में आई? क्या अब आप लोगों को समझ में आया कि जब आप ऐसे और सॉरी ऐसे नहीं, जब आप प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन को प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपको कौन सी चीजें प्रायोरिटाइज करनी है और कौन सी चीजों को आपको लीस्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखना है. अब जाहिर है जब हम अपने सेशन स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि हर टॉपिक को किस तरह से करना है, उनके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, और हर टॉपिक को हम अलग करेंगे, उनके डेडिकेटेड सेशंस होंगे. लेकिन राइट नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपको अपने, और यू नो दिस डेमो सेशन इज फॉर एवरीबॉडी, सारे सीएसएस एस्पिरेंट्स जो सीएसएस परस्यू कर रहे हैं उन सब के लिए है ये डेमो सेशन, ताकि उन सबको पता चल जाए कि अपनी एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम, बहुत सारे लोग 99% इफ नॉट 99 आई वुड से अल्ताफ विल बी एबल टू गेट, अल्ताफ विल बी एबल टू गिव बेटर नंबर या परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो कि फेल कर जाते हैं एसए और प्रेसी को. तो एसए और प्रेसी if not 99, I believe 96 or 95% of students they fail essay and Prezi. Prezi आप फेल कर जाते हैं. क्यों? क्योंकि आप स्ट्रेटेजिकली अपनी प्रेपरेशन को डिजाइन नहीं करते हैं, हेयर एंड देयर आपकी प्रेपरेशन हो रही होती है और आप प्रायोरिटी के ऊपर अपने टॉपिक्स नहीं रखते हैं. तो इस डेमो सेशन के अंदर मेरा जो मेन मकसद था वो यही आपको बताना था कि आपको अपनी प्रेपरेशन को किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करना है. All right, so we have covered all the slides. Koi question? If you guys want to ask me any question, just fire away. You can turn on your mic and ask me. Okay, Aliza Khalil. She wants me to share the past paper slides again. Past paper slide. So this is the past papers slide. इस slide के अंदर मैंने pattern बताया है सिर्फ grammar portion का. And the main thing to observe in this slide is that what is the recent pattern. Point number 1 of this slide will tell you the recent pattern that the FPSC examiners follow while setting the paper. From 2019 to 2024, sentence correction aati rahi hai for 10 marks. You get prepositions for 5 marks and punctuation for 5 marks. Prepositions are basically those words which tell a certain relation with a noun or a pronoun. Relation can be their position, their time, etc.
सो 2024 के अंदर इस बार तो काफी डिफिकल्ट प्रोपोजिशंस आई हैं. सो preposition is something that we need to focus more on, because the examiner is now giving difficult prepositions. I'll share a few examples with you. So question number 5 ka part B, that is the prepositions based question of 2024 paper of Precis and composition. इसका जो first part है, it says his research is characterized dash a deep understanding of genetic mutations. So the correct answer is by. His research is characterized by a deep understanding of genetic mutations. Second, इसका part था the solution is contingent on dash sorry, the solution is contingent dash various factors. The solution is contingent on various factors. So basically your prepositions are by, on, with, to, between. The discussion oscillated dash two main points. The discussion oscillated between two main points. So it's actually telling you the relation um, of a noun or a pronoun. So those are your prepositions. Punctuation, I think you guys should know what punctuation is, but if not, I'll tell you. Punctuation is your commas, colons, question marks, exclamation marks, commas, inverted commas, apostrophes, and so these are your punctuations. You will be given questions, sentences in the paper which will not be grammatically correct. By grammatical incorrection, I mean that they will not be punctuated. So you will have to use right punctuation in order to make those sentences grammatically correct. And I will make it clearer to you guys when we will start our questions on the dedicated topics. Ma'am, do we need to prepare vocabulary from the देखो again. Alia, I have already talked to you about vocabulary. Vocabulary आप GRE से कर लीजिए, आप Oxford Dictionary याद करना शुरू कर दीजिए. Vocabulary, okay, fine, I'll give you my example. I'll be very honest with you. Altaf has been very generous with my introduction. He's a very kind man. That's why he has, um, given me a lot of compliments on my English. But as a matter of fact, I believe that my English is a little above average. I may not be an average student, but my English is maybe a little above average. And I was able to do, and I did not really prepare for vocabulary because I knew कि मैं जितना भी vocabulary के लिए prepare कर लूँ, I'm not sure if those words are going to come in the paper. There are hundreds and thousands of words and you cannot prepare for all of those words. आप GRE की कर लीजिए, आप इंटरनेट से उठा के सारे papers कर लीजिए, आप कितना भी vocabulary के लिए prepare कर लें, you will never be able to completely prepare this category. और ये category है भी 30 marks की vocabulary की, जो कि 20 marks MCQs में आती है और 10 marks आपके subjective paper में आती है, pair of words और idioms की. So vocabulary, if you are going to take my sessions, हम vocabulary हर session में करेंगे. It's not like कि हम vocabulary छोड़ देंगे, हम vocabulary हर session में करेंगे. And we will start from the past papers. Past papers, at least 10 past papers की हम पूरी vocabulary complete करेंगे. And trust me, at least for 2024 repetitions हुई हैं. 2023 का special exam और 2024 का जो CSS का एग्जाम हुआ है उसके अंदर vocabulary की repetitions हुई हैं, similar words आए हैं. तो अगर आप past papers कर लेंगे, आप जान लीजिए कि कम से कम 2 से 4 तो आप आराम से कर ही लेंगे. So, Shahzadi, I am answering to this question regarding vocabulary, basic grammar. Yes, beta, you know, basic grammar. So, what do you mean by basic grammar? मैंने आपको, okay, first let me complete the answer to the previous question regarding vocabulary. Vocabulary हम हर सेशन में करेंगे, हम पास पेपर्स को कंप्लीट करेंगे. पास पेपर के जो पैटर्न्स हैं वो ये हैं कि vocabulary रिपीट हो रही है. तो अगर आप सारे पास पेपर्स कर लेंगे तो कम से कम कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो कि आप जरूर करेंगे. और एक वर्स्ट केस सिनेरियो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन के कॉम्पोजिशन के पेपर का, कि अगर आपको वोकैबुलरी बिल्कुल भी नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 30 में से कोई भी एक वर्ड नहीं आता, 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वोकैबुलरी के बेस के ऊपर बेस्ड, और आपको 30 में से एक भी आंसर नहीं आता, तो फिर भी आपके पास 70 मार्क्स होंगे जिनके अंदर से आप अगर जो स्ट्रेटेजी मैं आपको दे रही हूँ फॉर प्रेपरेशन उसको फॉलो कर दें, आई एम प्रिटी श्योर दैट यू विल बी एबल टू यील्ड एटलीस्ट
you will be able to achieve at least 40 to 50 marks out of those 70 marks, even if you do not get a single mark out of vocabulary, जो कि ऐसा नहीं होता है, because probability says that तुक्कों का भी कोई probability होती है, तुक्के भी लग जाते हैं. And this is actually a worst case scenario, जो कि हमारे केस में नहीं होगा, because we will be actively preparing for vocabulary as well. But still, if you um, uh, look for the worst case scenario, तो फिर भी आपका worst case scenario में भी आपको 2-4 मार्क्स मिल ही जाएंगे vocabulary में. तो vocabulary के लिए परेशान नहीं होना है, परेशान होना है प्रेसी, comprehension, translation और grammar portion के लिए. प्रेसी प्रैक्टिस के लिए हम 2-4 एग्जाम्पल्स ऑफ द इंटरनेट करेंगे, बाकी तमाम पास्ट पेपर्स की प्रेसिस करेंगे, तो आपकी एक स्किल सेट जो है वो आपका कमांड जो है वो बिल्ड हो जाएगी. प्रेसी जो है आप कितनी भी कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि वो प्रेसी कोई एक पेपर में आ जाएगी. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. यू हैव टू डेवलप अ सेट ऑफ स्किल्स इन ऑर्डर टू एस योर प्रेसी इन द पेपर, and for that you need to learn the rules, you need to practice, and you need to do active learning to ace pressy in your paper. So there was this one question which I forgot. I think it was from Shahzadi. Shahzadi, if you can repeat your question, please. Yeah, this question. Fix a basic grammar for enrolling. They can basic grammar ka. No, you should not go for GI. I would say that you should not go for GI word list for preparation. But if you have time on your hands, then you may go for it. Vocabulary ke liye. If you really, really want to do it, then you may. I cannot, stop you. And if you have time, which is your most important asset when you're preparing for a CSS, time is your most important resource. If you have some of that resource left, then you can go for other sources and prepare for vocabulary. And basic grammar का मतलब ये है कि basic grammar, when I say basic grammar का मतलब ये है कि आपको 6 से 8 फिक्रे, you should be able to write at least 6 to 8 sentences on any topic that comes in your mind, and those 6 to 8 sentences should be correct grammatically. Okay, I'm not asking you to write extraordinary sentences with extraordinary English. No, कोई हाई-फाई इंग्लिश इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. Write simple 6 to 8 sentences on any topic and get those sentences assessed. If those sentences are grammatically correct, then you're up for it. You are fine to, take our sessions for pressing and comprehension, composition, and this means कि आप aspire कर सकते हैं CSS. So by basic grammar, I mean the basic understanding of functional English. और अगर आपकी वो basic understanding है, तो I think you are good to go for the preparation of Prezi and comprehension. So, any other question? Any question regarding the... Yes, we will be... देखें, जब हम बात कर रहे हैं कॉम्पोजिशन की, ग्रामर पोर्शन की, आपने अभी सवाल किया, तो ग्रामर पोर्शन जो है वो हम पास्ट पेपर से प्रिपेयर करेंगे, और मैं आपको पास्ट पेपर के अंदर जो एलिमेंट्स, जो टॉपिक्स ऑफ ग्रामर्स पढ़ाए हैं, या जो टॉपिक्स ऑफ ग्रामर्स पास्ट पेपर्स के अंदर आते रहे हैं, हम वो सारे कवर करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ we are going to study noun, so we will study the specific nouns that the examiner has given in the paper with the specific examples from the past papers, so that you have a clear understanding of how to you have a clear understanding of the direction that you have to head in. Okay, here and there हर किस्म की तैयारी नहीं करनी है, specific targeted तैयारी करेंगे इंशाल्लाह. Basic grammar, again basic grammar, देखें बेसिक ग्रामर जो है वो हम कवर करेंगे, और एग्जाम्स के अंदर जो ग्रामर आती रही है उसको हम उसके बेसिक रूल से ही स्टार्ट करेंगे और बेसिक रूल से ही पढ़ेंगे. लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि हम कंप्लीट बेसिक ग्रामर पूरी रैन एंड मार्टिन, सो आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल कि हम पूरी रैन एंड मार्टिन कवर करें. लेकिन जो एग्जाम रिलेटेड, एफपीएससी रिलेटेड जो ग्रामर पोर्शंस इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू एस द पेपर, वी आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ दोस टॉपिक्स इंशाल्लाह.
Any other question? If you guys don't have any more questions, I think I should message Altaf. Madhunisa, she says that everything is clear to her. Yes, of course, you have to practice grammar and Prezi daily. When you are dealing with CSS, you have to prioritize two subjects daily. दो subject आपको कम से कम 30-30 मिनट दो subject को तो रोज देने हैं. That is your essay and your Prezi. ओके, तो आपको ऐसे जो है रोज लिखना है. मैं ये नहीं कह रही आधे घंटे में आप पूरे 3,000 वर्ड्स लिख लें. दिस इज इम्पॉसिबल. 3 घंटों में 3,000 वर्ड्स नहीं लिख पाते हम. 2,500 से ज्यादा नहीं हो पाते. आपको एक पैराग्राफ ऐसे का रोज लिखना है. आप अपना एक ऐसे स्टार्ट कर लें और उसको रोज एक पैराग्राफ 30 मिनट का आपने लिखना है. और प्रेसी का कोई भी एक टॉपिक आपको रोज करना है. सो ऐसे एंड प्रेसी ये दो सब्जेक्ट हैं जो कि आप 1 घंटा डेडिकेटेड सारे दिन में इस सब्जेक्ट को रोज देंगे. और फिर साथ में कोई दूसरा भी सब्जेक्ट चला सकते हैं. एनी अदर क्वेश्चन? Alia, essay is not my department. Essay is Altaf's department, and I think वो आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर देंगे essay के बारे में. He is a CSP officer. उन्होंने ऐसे पास भी किया है. So essay is Altaf's department. वो आपको गाइड कर देंगे. Fee structure and timing, these are the things that we will discuss. I will discuss with Altaf and then I will let you know. As a beginner, आप जहाँ से start करेंगे. Okay, so as a beginner, आप start करें रेन एंड मार्टिन से. Beginner मेरी नज़र में वो लोग होते हैं जिनको is, am, are, BEEN, ben, BEING, being इसका भी इस्तेमाल नहीं आता. तो मेरी नज़र में वो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे. तो आप रेन एंड मार्टिन को कंसल्ट कर सकते हैं. यस, एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक थिंग्स आर क्लियर. बिल्कुल बेटा. फायजा, हम प्रेसी और कॉम्पोजिशन की प्रैक्टिस ही करेंगे इन सेशंस में. और ग्रामर की भी करेंगे. बट प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन इज आवर मेन फोकस. और if you know these, then you're good to go, Dr. Isha. So, any other question relevant to our demo session? Duration of what? Momina, duration of our session? I think 1 to 1.5 hour every day हम अपना सेशन रखेंगे. क्योंकि इससे ज्यादा अगर मैंने आपको पढ़ाया तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे. This is something that we will design. I will design my lectures और हम टॉपिक वाइज सबको करेंगे. मंथ, आई थिंक हमारा ये प्रेसी और कॉम्पोजिशन का पूरा सब्जेक्ट हम 30 to 35 सेशंस के अंदर कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह. सो अराउंड अ मंथ आई वुड से. और इसके अंदर देखें, all of those people who wish to register for this subject should keep in mind that I am going to give you. So all of the aspirants who wish to take my session should keep in mind कि हम डेली बेसिस के ऊपर छोटे छोटे असाइनमेंट्स रोज करेंगे. बिकॉज ये सब्जेक्ट प्रैक्टिस मांगता है और एफर्ट मांगता है. एक्टिव लर्निंग की जरूरत है इसके अंदर. सो स्मॉल 10 to 15 मिनट्स के असाइनमेंट्स आपको रोज करने होंगे और एवरी अदर डे एटलीस्ट. इस तरह से आपकी प्रैक्टिस जो है, जो कमांड है, वो बिल्ड हो जाएगा. एंड प्रेसी आफ्टर ऐसे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट व्हेन इट कम्स टू CSS. I think Altaf will also second me.
All right, so I think it's time for Altaf to join. Okay. Khadim Hussain, Pressy is my department, essay is Altaf's department. I am going to design my lectures and sessions of Pressy, and Altaf is going to take care of his department, and उसके जो सारे सेशंस हैं वो उसकी डिटेल्स आपको खुद दे देंगे. You're welcome.